Hello, friends. My name is Priya, and I will be helping you. And this webinar is specially arranged for the students who are still confused, still not, they're exploring options, still don't know how to go about in future. So if you're facing any technical difficulty, you can leave a message. Also, ये webinar दो parts में divide कर रहे हैं हम. In the first, I will be giving you briefing, and in the second session, you can ask all your questions. So the theme of our webinar is want to become a good doctor. So there are many students out there who want to become a good doctor, but they don't know exactly how. The main question रहता है कि कैसे बने एक अच्छा डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो किस तरीके से एक अच्छा डॉक्टर बने, राइट? या तो वो अभी भी स्टक है अपने नीड को लेकर, या फिर वो कंफ्यूज्ड हैं और अभी भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाउ टू गो अबाउट विद दैट. So I will be helping you with that. So you all know कि MBBS इंडिया में करना is not at all easy, right? इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए you have to face the tough competition of NEET, right? NEET एग्जामिनेशन अगर क्लियर नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स को उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, राइट? और सबको पता है कि we only have 28,000 गवर्नमेंट सीट्स, और अगर हम इस साल के डेटा पे देखें तो 2017 में जो स्टूडेंट्स जो अपीयर मतलब कर रहे थे फॉर नीट वो अप्रोक्सीमेटली 11 lakhs, राइट? तो बाकी के स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे जो अपीयर नहीं कर पाते नीट के लिए? व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, राइट? So we are focusing on those students, and I hope कि by the end of this presentation आपको एक बेटर व्यू मिले, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे आप अपने एम को, अपने गोल को अचीव कर पाओगे, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स? So these remaining students just have two options left with them. या तो वो हाई डोनेशन दे के अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंडिया में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वहां पर जाकर अपना एडमिशन करवा लें. Each one of us know कि एक इंडिया में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस कितनी ज्यादा है. नॉट जस्ट दैट, उनकी डोनेशंस कितनी ज्यादा है. तो ऑब्वियसली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार, हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, एंड ऑब्वियसली हम डॉक्टर बनना चाहते हैं. लेकिन ये चीजें हैं, नीट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विद हाई डोनेशंस, जो कि हमारे और हमारे करियर के बीच में आते हैं, हमारे और हमारे गोल के बीच में आते हैं, right? So what else, if not these private universities, what else can you do? So you can further opt to do MBBS from reputed universities of abroad. Now, when we talk about abroad, that what comes in our mind? First thing that comes in our mind is which country? कौन सी country हमारे लिए अच्छी रहेगी? कौन सी country हम choose करें जहाँ से हम MBBS कर सकते हैं, right? तो आपको बहुत सारे एजेंट्स ने अप्रोच किया होगा फॉर रशिया, चाइना, यूक्रेन, किर्गिस्तान, लेकिन व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट दिस कंट्रीज इज कि वहां पर लैंग्वेज भी आपको सीखना पड़ेगा. ये फैक्ट वो हमेशा हिडन रखेंगे, आपको नहीं बताएंगे, या बहुत ही इजी टर्म्स में बोलेंगे इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, पर इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप इन कंट्रीज में पढ़ते हैं तो आपको लैंग्वेज डिफिकल्टी होगी. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आपको लैंग्वेज, एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाई जाएगी. एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ऑलरेडी पता है कि MBBS प्रोग्राम एक बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए उसमें, बहुत सारा फोकस चाहिए उसमें, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज, दैट्स अगेन एन इशू. तो अभी क्या किया जाए? तो नाउ लेट्स फोकस ऑन द कंट्रीज जहाँ पे लैंग्वेज इशूज नहीं होते, प्रोबेबली लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड. लेकिन इन यूनिवर्सिटी में टफ और कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं. अगर वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जैसे कि टॉफल्स, आईएलटीएस, ये आपको फेस करना पड़ेगा, एंड प्रोबेबली आपको इसके बारे में भी कोई नहीं बताएगा. नीट एग्जामिनेशन जितना डिफिकल्ट होता है उतना ही टफ ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. सो नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि अब क्या किया जाए, अपने ड्रीम, अपने गोल तक कैसे पहुंचा जाए. So what if I tell you that you can, fulfill your dream from America? When we talk about America, many of you students must have thought
कि यार अमेरिका, oh my god, it's going to be very costly. But the main thing is, what if I tell you that you can study your dream career and you can do your dream career from America at a very subsidized fees, and along with that you can also earn a good amount of stipend? Doesn't it sound like a plan? I mean, America, a dream country, ऊपर से आप वहां से एक बहुत ही सब्सिडाइज फीस में एमबीबीएस कर लोगे एंड साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो क्वेश्चन अराइजेस, यार ऐसा कहाँ पे होगा? ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप अपना ड्रीम को फुलफिल कर पाओगे, वो भी इतने कम सब्सिडाइज फीस पर? तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू आर लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आपको एक प्लेटफॉर्म देगी अपने एम तक पहुंचने का। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करने पड़ते इन बिटवीन, like NEET examination, like entrance examinations, language problem, ये सारे obstacles को हम हटा दें, so आप लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी से अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हो, उस गोल तक पहुंच सकते हो। वो डॉक्टर टैग, जो एक डॉक्टर का टैग हम सब चाहते हैं कि हमारे नाम के आगे हो, जिससे हम और भी प्राउड अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारे आगे हो। But if I ask you to close your eyes and just, add that doctor word, that doctor tag in front of your name, I believe आप सबको बहुत अच्छा लगेगा वो सोचकर। लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी gives you that opportunity to study from this opportunity and get that tag of doctor, a reputed doctor, a good doctor, and you can serve humanity after that. So when we talk about Lincoln American University, what this university is exactly, when we talk about the infrastructure, यहाँ पर fully equipped infrastructure है with modern technologies, libraries are available, computer labs are available. Along with that, our main focus is on the smart education, to provide smart education to all the students. यहाँ पर projectors classrooms में available हैं for the students. Along with that, when we focus on the student-teacher ratio, it's just 10:1, which means कि teacher का focus will be exactly on you. हर एक student की weaknesses and strengths पे teacher का main focus होगा. You can take a one-to-one session with the teachers. आपको कोई भी problem आती है, you can directly get in touch with them. You can take out time after classes and you can meet them. You can clarify your doubts with them. इंडिया के जैसा नहीं रहेगा कि 50 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है, टीचर को स्टूडेंट्स के नाम तक नहीं पता, राइट? यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फैकल्टी, हमारी फैकल्टी कंप्राइज करती है टॉप रिसर्चर्स, फिजिशियंस, डॉक्टर्स फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नॉट जस्ट दैट, वो आपको कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं टू प्रोवाइड बेस्ट नॉलेज दैट दे हैव, राइट? पूरे तरीके से सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं। एज आई टोल्ड यू, स्टूडेंट टीचर रेशो, कि वो आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन गेट इन टच विद देम, आप उनसे बाद में जाकर आफ्टर क्लासेस जाकर उनसे बात कर सकते हो। दे आर हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड, दे विल बी हेल्पिंग यू throughout the process. You have any problem, anytime you can get in touch with them. They are very friendly. So this is what our Lincoln American University is. Now, when we talk about mess facility and hostel facilities, many students, we are Indians, right? We have a habit of eating Indian food. We need those spices. We need that taste in our food. And obviously, so keeping that in mind, we have, in this university, are providing you Indian mess facility. which means कि वहां पर आपको माँ के हाथ का तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा खाना मिलेगा, इंडियन खाना मिलेगा। Along with that, continental and Mexican cuisine is also available, कि जिस दिन यार इंडियन नहीं खाना तो आप कुछ और भी खा सकते हो, राइट? तो अगर हम हॉस्टल्स की बात करें, तो इट इज fully furnished, well maintained and ready waiting for you guys to come. हमने पूरी तरीके से, it is surrounded with Wi-Fi facilities. Along with that, we are giving separate hostels for boys and girls, so that of course your parents must be, have a little thing in their mind कि यार girls को लेके थोड़ा सा वो protective होते हैं। Just keeping that in mind, हम आपको separate hostels provide कर रहे हैं, जो कि completely under camera surveillance रहेंगे, properly under camera surveillance. Along with that, ऐसे you cannot enter the campus. You need those ID cards with you. Where this university is actually located, so let's focus on that now. This university is located in Guyana.
तो गयाना जो है वो सदर्न अमेरिकन नेशन है, सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में रहता है। ये कैरेबियन कंट्री है एंड ऑफिशियली इसका नाम है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना। ये बाउंडर मतलब इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो टच करती हैं ब्राजील, वेनेजुला, सुरिनाम एंड along with that अटलांटिक ओशन को भी ये टच करता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट गयाना इज ये जो नेशन है ये ओनली ऐसा साउथ अमेरिकन नेशन है जहाँ पे इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे हम पहले बात कर रहे थे अबाउट द लैंग्वेज प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट्स फेस इन द अदर कंट्रीज, तो ऐसा यहाँ पर आपको नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, विच मीन्स कि आपका टीचिंग का जो मीडियम रहेगा यहाँ पर वो इंग्लिश होगा, राइट। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यार इंडिया में भी हमको फर्स्ट सेकंड क्लास से हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा रही है, सो नाउ वी आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, राइट। तो ऑफ कोर्स यार एक नई लैंग्वेज क्यों लर्न करनी, इंग्लिश लैंग्वेज में ही इंग्लिश टीचिंग आप आराम से इजीली पढ़ाई कर सकते हो, आपको कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है, लैंग्वेज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना टोटली आपका फोकस जो है वो लैंग्वेज पे रहेगा ना। हाउ टू टेक एडमिशन, कैसे इस यूनिवर्सिटी में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, क्योंकि बाकी जैसे यूनिवर्सिटीज कंट्रीज में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इतनी इतनी ड्यूरेशन होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, ऊपर से आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू डोंट हैव टू गिव एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो डोनेशन व्हिच मींस यू हैव टू गिव नो डोनेशन एट ऑल। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके के हिडन चार्जेस नहीं होंगे। एंड along with that the basic requirements that are needed for taking admission in Lincoln American University is just that you need to have 17 years of age and you should have minimum 60% marks in class 12 PCB. That is the only basic criteria that you need to follow to take admission in our university. That's easy, you know, no need of any entrance examination, no donation, direct admission in the university. Sounds like a plan. I believe it's a wonderful opportunity for you all. Now moving on to the course duration. Many students must be thinking यार कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने साल का कोर्स है, कैसे तरीके से उसको सेग्रीगेट। So I will be giving you a brief about that as well. पहले साल जब आप जाते हो तब आप वहां पे जाके you will be doing 1 year of your pre-medical. Then after completing your 1 year of pre-medical, then you will be having 2 years of pre-clinical, right? जो कि आपके basic general sciences include करेंगे। उसके बाद आपके 2 साल 5 महीना 2 years and 5 months will be your clinical rotation, जिसके अंदर हम आपको 2 ट्रैक्स ऑफर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के पर्सनल चॉइस है कि वो कौन सा ट्रैक ऑप्ट करते हैं। अगर आप नॉर्मल ट्रैक ऑप्ट करते हो, विच मीन्स कि गयाना में जितने भी हमारे रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी बड़े टॉप मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जो एफिलिएटेड हैं लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ, यू कैन गेट एडमिशन इन दैट, you can work in that, you can practice in those hospitals, or else you can choose for USA track, which means सेंट्रल यूएस में जितने भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी टॉप मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जिनका लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। आप वहां पर जाकर काम कर सकते हो, अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकते हो एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर क्लिनिकल स्टडीज। And the best part about your clinical rotation will be कि लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अगर आप क्लिनिकल रोटेशंस के लिए ऑप्ट करते हो तो आगे जाकर क्लिनिकल रोटेशन में दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप 20 आवर्स अ वीक काम भी कर सकते हो साथ साथ। इट्स नॉट कि आपको सिर्फ डेडिकेटेडली यू हैव टू वर्क, प्रैक्टिस, यू कैन वर्क अलोंग विद दैट, व्हिच मींस कि आप 20 घंटा हफ्ते में काम कर पाओगे एंड 2 से 3 लाख तक मंथली आपको स्टाइपेंड इन हैंड आपको मिल जाएगा, इतना आप कमा भी पाओगे। दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट, आई बिलीव 2 से 3 लाख रुपया मंथली, वो भी आपकी यूजी नहीं आपको मिल रहा है, सो दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, United States of Medical Licensing Examination, which is USMLE. You must have heard about this, examination as well. So, what this examination is exactly? United States Medical Licensing Examination ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर आपको लाइसेंस मिलता है टू प्रैक्टिस इन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपको ये यूएसएमएलई के 3 स्टेप्स क्लियर करने होते हैं, जिसके बेसिस पे फर्दर you can practice in United States, as well as you can apply for permanent residency over there.
तो इसके 3 स्टेप्स रहते हैं. The first step, USMLE का first step will be after completing your pre-clinical, which means जब आप अपना 3 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट करोगे, पहले प्री मेडिकल फिर प्री क्लिनिकल 2 साल का, तो उसके बाद यहाँ पर आपको USMLE का स्टेप 1 देना होगा. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर यूनिवर्सिटी, लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, इसकी हम आपको इनिशियल पहले साल और दूसरे साल में हम आपको USMLE की कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे. मतलब कि हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो USMLE बेस्ड करिकुलम रहेगा, so that you people are able to clear that USMLE examination, right? उसके बाद आता है दूसरा स्टेप. USMLE सेकंड स्टेप विल बी आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5.5 ईयर कोर्स ड्यूरेशन, which means जब आप अपना पूरा 5 साल 5 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लोगे, अपना क्लिनिकल रोटेशंस भी कंप्लीट कर लोगे, तब उसके बाद आपको USMLE का स्टेप 2 देना होगा, राइट? And then comes USMLE step 3. USMLE step 3 will be after completing your PG course. तो USMLE step 3 जो रहेगा वो PG कोर्स के बाद रहेगा. मतलब PG कोर्स कंप्लीट करने के बाद once you give USMLE step 3, your degree will be globally recognized. You will get the global license. Not only in the United States, you will be eligible to work all across the globe, right? So now let's talk about the degree. When you complete your 5.5 year course duration, you will be getting a degree of Doctor of Medicine, which is MD, right? So जब आप अपना 5 साल 5 महीने का कोर्स कंप्लीट करते हो, तो जब आपको ये डिग्री मिलेगी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यू विल बी हैविंग 2 ऑप्शंस, राइट, विद यू. फर्स्ट ऑप्शन विल बी, या तो आप इंडिया आ सकते हो. इंडिया में अगर आप वापस आते हो 5 साल 5 महीने का कोर्स कंप्लीट करके, तो आपको MCI का स्क्रीन टेस्ट देना होगा, राइट? MCI में आके आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ स्क्रीन टेस्ट, जो कि सारे फॉरेन स्टूडेंट्स देते हैं, वो सेम आपको उसे देना होगा. बट इफ यू कंप्लीट योर PG ऑल्सो from our university, from US, then you will be getting a specialized degree, fine, which means your degree will be globally recognized, globally licensed, which means if even after that, अगर PG के बाद भी आप इंडिया आना चाहते हो, पेरेंट्स के पास आना चाहते हो, या फिर you have a aim of serving India, which most of the students have. तो अगर आप इंडिया आते हो उसके बाद, तो आपको MCI का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, मतलब MCI का कोई भी स्क्रीन टेस्ट नहीं देना है. You can directly start working in any private or government hospital of India. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि after completing your 5.5 year course duration, you can directly go for your PG, and once you complete your PG and you come back to India, there is no need of giving any MCI examination. तो उसके बेसिस पर आपको कोई MCI का एग्जाम नहीं देना, आप डायरेक्टली काम करना शुरू कर सकते हो इन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया, राइट? Now, advantages of for the Indian students from this university. आप सबके मन में ये चीज होगी कि यार इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने का ऐसा क्या खासियत है, हम मतलब इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर क्यों जाएं, राइट? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के डीन है, ही इज एन इंडियन, फाइन, व्हिच मींस कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है, बिकॉज वी टोटली अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि आप देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु विल बी गोइंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स हु विल बी सेपरेटिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. तो होम सिक फील होता है, आपको इश्यूज आएंगे, you will be a little hesitant, you will be a little scared for the first time. But when you know that the dean of the university is Indian, the dean of the university will be there, is Indian, you feel a little comfortable, you feel a little better. आपको हिम्मत मिलता है उससे, you get motivated. If you have any problem, you can directly get in touch with him. You can take an appointment. You can take a one-to-one session with him. You can discuss your problems with him, and he will be right there to help you all. Not just that, we are also providing one Indian representative who will be available in the university for all the students. अगर आपको कोई भी issue आता है, छोटी से छोटी problem भी आती है, you can directly get in touch with the Indian representative of the Lincoln American University, and you can solve that queries right away. Fine. Along with that, Guyana की जो population है, 40%, 40% of the population is of Indians, which means कि वहां पर इंडियंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, और इंडियंस हैं तो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे आपको सिटी में.
तो आपको बिल्कुल भी होमसिक फील नहीं होगा, आपको बहुत कंफर्टेबल आपको एनवायरनमेंट मिलेगा वहां पर। एंड इंडियन फूड तो आपको मेस में भी मिलेगा और इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी मिलेगा। When we talk about the temperature of Guyana, Guyana is very pleasant in terms of temperature. It is very suitable for the Indian students because वहाँ का temperature generally it is between 25 degrees Celsius to 33 34 degrees Celsius, which means कि बहुत ही प्लेजेंट है और बहुत सूटेबल है आप स्टूडेंट्स के लिए। आप वहाँ पर जनरली लोग वहाँ पर वोकेशंस के लिए जाते हैं, सो आप एक ऐसी डेस्टिनेशन पे पढ़ाई करने जा रहे हैं जहाँ पे लोग अपने वेकेशंस बनाने आते हैं। Now, scope after completing MBBS from Guyana. What will be your scope? क्या scope रहेगा आपका after completing MBBS from Guyana? So the first option will be student can either, come back to India after clearing MCI screen test, or they can work in any government, and they can work in any government and private hospital of India, which means कि आप आओ इंडिया वापस अपना 5 साल 5 महीने का कोर्स खत्म करके यहाँ पर आने के बाद MCI का स्क्रीन टेस्ट दो, द वे आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। उसके बाद आप अपना किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो यू कैन फर्दर build your career in America, which means you can do the PG course also from there after completing your 5.5 year course duration। आप वहां से PG कर लो, PG करने के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू USMLE स्टेप 3 देने के बाद यू गेट अ ग्लोबल लाइसेंसिंग एंड आप अपना परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन प्लान टू सेटल इन USA or any other country across the globe, because many of us have a dream कि हम बाहर सेटल हों, अपने पेरेंट्स को बाहर लेके जाएं। So it's a wonderful gateway for all the students कि आप डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी लेकर वहां पर सेटल हो सकते हैं, राइट। And after completing your PG course, अगर आप इंडिया भी आप वापस आना चाहते हैं, then you don't have to clear any MCI examination, which means कि आपको डायरेक्टली आप यहाँ पर आकर किसी भी गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप डायरेक्टली काम करना शुरू कर सकते हो विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कोई भी आपको झंझट नहीं रहेगा, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग। फाइन। Now coming on to the curriculum. The curriculum of Lincoln American University is totally USMLE focused, totally USMLE based, which means हमारा main focus is कि आप सारे students USMLE United States of Medical Licensing Examinations easily clear कर पाएं, उसमें आपको कोई problem ना आए। हमारा पूरा curriculum उसी पर dedicated है, उसी पर based है। बिकॉज वी ऑब्वियसली नो कि अगर आप USMLE के एग्जामिनेशन के बाद आप PG करने के बाद यू डोंट हैव टू गिव एनी MCI examination। Along with that, we will be giving you in-depth knowledge of all your basic medical sciences, and उसके बाद students को proper 3D animated integrated program मिलेगा। And not just that, आपके clinical rotations के time भी you will be, आपको opportunity मिलेगी to record history and perform physical examination and interpret the findings, which means कि आप doctors को assist भी करेंगे, साथ साथ आप आगे histories वगैरह record करेंगे patients की। And along with that you will be taking recording history case studies वगैरह आप prepare करेंगे for the patients। so ये सब कुछ आपके करिकुलम में फोकस रहेगा, सब कुछ आपके करिकुलम में बेस्ड रहेगा। and Lincoln American University will be giving you an opportunity कि आपको proper knowledge मिले about the curriculum that you will be MBBS basically your MBBS program focused curriculum। Now what will be the admission process? आपका admission process जो students interested हैं, how to go about get admission in Lincoln American University। अगर Lincoln American University में सबसे पहले to get admission आपको you will have to register yourself, you will have to enroll yourself with us। For enrolling yourself with us, you will be sending your academic documents to us। Your academic documents means your 12th, 10th and 12th mark sheet and everything related to that। once आप उनको सबमिट करवाते हो, उसके वेरिफिकेशन के बाद हम that will be going to the university। University will be verifying all your academic documents, and जब वो academic documents verify कर लेंगे,
then you will be within a month's time you will be getting an acceptance letter from the university, right? Acceptance letter जब आएगा university से, which includes your admission letter, your invitation letter from the university, then happily we will be, you know, taking care of the visa process as well. So this will be a very hassle-free procedure, because everything will be taken care by the admission process, officers. We have our admission process officers in Lincoln American University. So you have to leave all your worries to them. आपको आपको बिल्कुल कोई भी चीज का टेक केयर नहीं करना. सब कुछ related to your documentation, related to your process will be taken care by them. So you just have to sit back and relax and leave all your worries on Lincoln American University, right? So once your visa process is done, then we will be, applying for your tickets, and your departure procedure would start. So we will be taking care of everything, from your registration to your departure procedure to your course curriculum, until you get that doctor tag added before your name, right? So our mission and our vision is totally focused. Our mission and our vision is totally focused on making you students, each and every student, each and every person who registered with Lincoln American University, a good doctor. That is our main aim and our main focus. So this will be our main focus, कि हम आपको एक अच्छा डॉक्टर बना पाए, एक अच्छा इंसान ऑब्वियसली बना पाए, एंड आप आगे जाकर आपके नाम के आगे वो डॉक्टर का टैग जो हमेशा से आपका ड्रीम था अपने नाम के आगे देखना, वो आपके नाम के आगे लग पाए. दैट इज आवर मेन फोकस. जो एम्स एस्पिरेशंस आपकी और कहीं से पूरी नहीं हो पा रही थी, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे, दैट नीट एग्जामिनेशन, दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, दैट लैंग्वेज प्रॉब्लम, द मनी प्रॉब्लम, लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू अश्योर कि ऐसा कोई भी इशू आपको ना आए, एंड ये सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाकर वी आर एबल टू गिव दैट करियर टू यू, वी आर एबल टू गिव दैट टैग, डॉक्टर टैग टू यू, that you can add before your name, and you can proudly call yourself Dr. So and so, and you can, further work. You can अपने पेरेंट्स का ड्रीम आप पूरा कर पाए, because we know कि बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा ड्रीम होता है कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी, वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट मीडियम, दैट पाथवे, कि किस तरीके से हाउ टू गो अबाउट विद दैट. लेकिन उनकी सारी प्रॉब्लम्स विल एंड एट लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, क्योंकि ना सिर्फ तो हम आपको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन एवरीथिंग दैट अ पेरेंट रिक्वायर्स. हॉस्टल्स, फैसिलिटीज, मेस फैसिलिटीज, फूडिंग फैसिलिटीज, एंड सबसे बड़ी बात है द क्लाइमेट कंडीशन, द इन्वायरमेंट ऑफ गयाना, which is very good, which is very suitable for you, for all the students, for all the Indian students. So that is why we want you to join our university. So now I believe you don't have to wait for anything. You just have to directly get in touch with us. You have to join this university to fulfill your dream career, and you can leave all your problems with us, because we are not just focusing on getting you admitted to this university. We are focusing on your future, which means that we are dedicated and dedicated to make you a good doctor, because your future is our future. So you can, this contact number is given right here over here. You can get in touch with me directly. My name is Priya. You can directly get in touch with us, or you can also visit our website, which is www.laumeb.org. And if you have any queries, you can get in touch with us. Our admission process officers are just a call away. You can get in touch with them. You can solve all your queries with us. Any queries that you children have, or you want to ask, आपके मन में कोई भी question आ रहा हो, so you can let us know about that. You can type here. आप यहाँ पे टाइप करके हमें अपने queries भेज सकते हो, so that हम आपको help करें, further आपकी query sort करें.
I'm waiting for your questions. So I believe somebody just asked that how we can get in touch with you. So here my number is available. You can directly get in touch with us here, and we will be helping you with all your queries. Whatever queries you have, you can get in touch. You can call, you can leave a message, and we are right here to help you.